A very good morning and welcome to our session on the topic Importance of Vaccination in Children. Considering the importance of the topic, we are glad to have Dr. Ankush Khanna among us today to help us understand it and all the crucialities of that topic. Also, if you have any doubts related to the topic or any queries, you can just ask our doctor, post that on the chat box or the comment section, you can say, and our doctor will help you out to solve all your queries out. Also, stay tuned till the last of the session. The doctor will be taking the questions by the last. Thank you, and doctor, you have the stage now. Good morning, everyone. I'm Dr. Ankush Khanna. I am a neonatologist and consultant pediatrician at Apollo Cradle Hospital, Amritsar. I did my fellowship of 2 years in neonatology from Oxford University in UK. So today we'll discuss an important topic about importance of vaccination in children, and I'll try to make it very simple, and I'll try to make it more interactive and in vernacular language so that all of us and not only doctors can understand it. So it's for our clients and for our patients and everyone in the Polos hospitals all over India. So we'll always try to make the sessions more informative for our patients and our population so that they can benefit from the sessions. So today's topic is importance of vaccination in children. So there are a lot of myths around vaccination in children, especially in the underdeveloped areas in the country. Even in the cities and the urban areas, a lot of parents that come to us have a lot of queries regarding the importance of vaccination in children. So we decided we'll take up this topic about how important are the vaccines, the common questions and scenarios that are coming up in the OPDs, and we'll try to answer these common questions in the single session, and if there are any queries you can ask me later on. So what is vaccination? Vaccination simply means injecting or giving orally or in any form a substance to a child that would provide him immunity against a particular organism in the near future. Simple language में अगर हम एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट या ऑर्गेनिज्म का टॉक्सॉइड या ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्शन करता है वो बैक्टीरिया, जैसे से फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जो हमारे बच्चों को इन्फेक्ट करता है, अगर हम वो बैक्टीरिया बच्चों में पहले से ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल दें तो वो बच्चे के अंदर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है, ताकि वो लेटर ऑन इन लाइफ अगर उसको वो बैक्टीरिया एक्चुअल ज़िंदगी में इन्फेक्ट करे तो उसके अंदर वो ताकत जो पहले से ही पैदा है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो इम्यूनिटी की वजह से वो उस बैक्टीरिया से लड़ पाता है एंड ही इज़ एबल टू फाइट दैट इन्फेक्शन इन अ बेटर वे. वो अगर होती भी है इन्फेक्शन तो कम सीवियर होती है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इन्फेक्शन प्रिवेंट ही हो सकती है. सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन. अब जो कॉमन क्वेश्चन हमें वैक्सीनेशन के दौरान पूछा जाता है कि नेचुरल इम्यूनिटी बच्चों की बहुत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्या है. दिस इज़ अ ग्रेट मिथ which is going about not only in the underdeveloped areas but even in the educated strata of the society. बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं नहीं वैक्सीनेशन स्कैम है या वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए, बच्चों को तो वैसे ही इम्यूनिटी होती है, गवर्नमेंट से तो कम वैक्सीनेशन आती हैं, कुछ कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वैक्सीनेशन बहुत कम होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं इंडिया में, एंड लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस. So they have a very simple answer. We'll not try to give any diplomatic answers. We'll directly give the direct answers based on research and books and what exactly is recommended in India and abroad. So these some of the questions may be tough, but they have very direct and simple answers. So we'll try to answer them directly and as simply as possible. So the simple answer to this thing is कि ये myth है कि वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए और आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत होती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, विच एवर इन्फेक्शन इट इज़. कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन नहीं, सभी इन्फेक्शन के लिए जिस भी चीज़ की वैक्सीन बनी हुई है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज डिजीजेस
the child cannot protect himself against those diseases naturally to a good extent. कुछ immunity तो सब में होती है, of course the natural immunity is there. If a person is able to protect himself against the disease with that immunity, it's good. But जो enhancement vaccination से मिलती है वो हमारे को इस बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम बना देती है. That it makes us much more immune to the disease with the vaccine than without the vaccine. So अगर 10 में से 5 बच्चों को कोई बीमारी लगेगी विदाउट अ वैक्सीन, तो 10 में से हो सकता है सिर्फ एक बच्चे को या उस एक बच्चे को भी वैक्सीन के साथ बीमारी ना लगे. तो दैट extra coverage that a vaccine provides is to a great extent very very important. और अगर वो वैक्सीन लगी हुई है और वो बीमारी हो भी जाती है, तो वैक्सीन लगने के बाद अगर बीमारी होती है तो वो सिवेरिटी कम होती है उस बीमारी की, और उससे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम होती है. तो सिंपल आंसर, कोई भी जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है वो अप्रूव्ड बाय अथॉरिटीज़ है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड बाय स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ है. वो ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए और वो दी जानी चाहिए. वो बिना रिसर्च के, बिना ट्रायल्स के मार्केट में नहीं आई है और उसके बेनिफिट है, इसीलिए हमारे बच्चे को दी जानी चाहिए. सेकंड क्वेश्चन जो हमें जनरली पूछा जाता है कि हमारे एक बच्चे को वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा. सो सिंपल आंसर टू दिस थिंग इज़ एनीथिंग कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स. सो अगर आप अपने बच्चे को सिंपल पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, तो इवन सिंपल पैरासीटामोल कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स. हाँ, ये ज़रूर है कि लाख में से किसी एक बच्चे को साइड इफ़ेक्ट होगा, तो वो तो आप किसी भी चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. एनी वैक्सीन कैन हैव एनी साइड इफ़ेक्ट, राइट? So even if you are just giving water to your child, the water may be infected. The water simply, if a child is drinking water, then that can also have side effects for your child. Any kind of food can have side effects for your child. So why just ask this question for a vaccine? जो वैक्सीन हमारे बच्चे के भले के लिए बनी हुई है, अगर हम उसके बारे में सिर्फ यही सोचेंगे कि लाख में से एक बच्चे को साइड इफ़ेक्ट सिवियर हो सकता है, तो वो जो बाकी 99,999 बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. हमें वी हैव टू लुक इट ऑन एट अ लार्ज स्केल. हैविंग सेड दैट, जनरली वैक्सीन सेफ होती हैं. दे जनरली हैव वेरी माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स. ऑफ कोर्स नीडल का पेन होता है, देयर कैन बी लोकल रिएक्शन, देयर कैन बी फीवर, देयर कैन बी रेडनेस, देयर कैन बी स्वेलिंग, देयर कैन बी पेन, एंड बच्चा क्रैंकी हो सकता है. सो जनरली अगर साइड इफ़ेक्ट हो भी वैक्सीन का, इट्स वेरी वेरी माइल्ड. Severe reactions to the vaccines or severe anaphylactic reactions to the vaccines or severe side effects of the vaccines are very very rare. So unless our child has actually a history of side effect to a particular vaccine, it's better to not devoid our child of the vaccine. Now what other questions can be asked? मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट वैक्सीन्स अच्छी होती हैं या प्राइवेट वैक्सीन्स होती हैं. नाउ अगेन, this has a very subjective answer. It's up to the parents to decide whether the government vaccines, they want to get it from the government or from the private institution. The bottom line is vaccination सभी लेनी ज़रूरी है. अगर पर्सनली हमसे OPD में पूछा जाता है, तो a simple answer is that if a person cannot afford the private vaccine, then he should not miss the vaccines. He should get the government vaccines done. And there are a few vaccines which are not available in government. Every state provides different vaccines. मतलब हर इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल हैं. कोई स्टेट ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, कोई कम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है. बट एक इंस्टीट्यूशन है IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके द्वारा जो रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं, देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स. उसमें से a few of the vaccines are very very basic vaccines which are provided by almost all the states, and कुछ वैक्सीन्स हैं जो काफ़ी स्टेट्स में नहीं मिलती हैं, जैसे फ्लू है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस A, then there's meningococcal vaccine, there is Japanese encephalitis vaccines, chicken pox vaccine which is called varicella vaccine.
So some of these vaccines are not available in the government sector. So if you are getting vaccinated from the government sector, it's better to get these vaccines which are not available in the government sector from the private sector, ताकि हम अपने बच्चे का कोई भी वैक्सीन मिस ना करें. Having said that, it's your personal choice. You cannot always assure the quality of vaccines in the government sector, and same for the private sector also. But if you get it from a good institution, of course, the quality of vaccine is bound to be good. The cold chain is maintained. तो बेस्ट है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी वैक्सीन एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से लगाई जाए जहाँ क्वालिटी भी एश्योर्ड हो और ये भी एश्योर हो कि कोई वैक्सीन मिस नहीं करे वो इंस्टीट्यूशन, राइट. So this is another common question which is asked to us by the parents. Now एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास रूटीनली ओपीडी में आती है, फोर्थ पॉइंट इन आवर डिस्कशन इज़ द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन. नाउ definitely the cost of the vaccine is an important factor for many of the families. Some of the vaccines are very costly. तो क्या करना चाहिए उसके बारे में, दैट्स व्हाट द पेरेंट्स आस्क, दैट ये इतने थाउजेंड की वैक्सीन है, ये इतने थाउजेंड की है, तो लगवाएं कि नहीं लगवाएं या कैसे करें. So cost is of course an individual consideration, individual family's consideration. If it's not a consideration for you, definitely get the vaccination done. Cost अगर आपके लिए घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी वैक्सीन मिस नहीं करनी चाहिए, इसका देयर इज़ नो सेकंड डाउट अबाउट इट. और अगर हमारे लिए कॉस्ट एक मेजर कंसिडरेशन है तो एटलीस्ट गेट द बेसिक वैक्सीन्स डन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री आती हैं. एटलीस्ट योर चाइल्ड वुड हैव 70% ऑफ द डिजीजेस कवर्ड इफ यू आर गेटिंग द गवर्नमेंट वैक्सीनेशन डन. नाउ another common scenario is, and the common question which comes to us routinely is the NRI patients. So NRI patients बोलते हैं कि अमेरिका में इतनी वैक्सीन्स नहीं लगती हैं या यूके में या कनाडा में इतनी वैक्सीन्स नहीं लगती हैं. So what do we do about that? How do we counsel the parents कि नहीं ये ज़रूरी है. So they ask कि इंडिया में इतनी क्यों लगती हैं. They sometimes have doubts. So it's very important to clarify their doubts. So फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका या कनाडा या यूके में इतनी सारी बीमारियां नहीं हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ आर नॉट एज कॉमन इन दीज कंट्रीज एज दे आर इन इंडिया. सो it's important to identify the important diseases which are there in your country and to vaccinate your children against these diseases also. So अगर हमारे पास कोई NRI आते हैं, like I worked in UK, I worked in London, तो वहाँ पे भी at birth, especially Indian origin के बच्चों के लिए BCG was recommended, but it was not recommended for the children who were born in UK. So why is that so? Because Indian origin के बच्चे are more likely to come to India, and जब वो इंडिया आएंगे तो they will be exposed to tuberculosis, meningitis, and that's why they should be given BCG vaccination at birth. So जब फॉरेन कंट्रीज़ खुद ये कंसिडर करती हैं कि जिन लोगों ने इंडिया जाना है they need some extra vaccinations because they actually are exposed to more diseases, then why are we not considering these vaccinations in our children? अब कुछ बीमारियां हैं, टाइफाइड है, tuberculosis है, hepatitis A है, and then even Japanese encephalitis hai. So many of these vaccines are not available and given in the Western countries because these diseases are not very prevalent in those countries. So but these diseases are very very prevalent in India. तो ये बीमारियां कंसिडर करते हुए जब आप इंडिया आते हैं, especially the NRIs, you should get your children vaccinated with these vaccines once you come back to India, right? तो आप इंडिया में हैं तो इंडियन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो IAP का शेड्यूल है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आजकल सब गूगल यूज़ करते हैं. यू कैन सिंपली गूगल इट एंड यू कैन चेक अगर आपके बच्चे को कोई वैक्सीन मिस तो नहीं हुई है. तो सब वैक्सीन आपको IAP शेड्यूल के अकॉर्डिंगली लगा लेनी चाहिए. एक और बेसिक शेड्यूल है वो NNF का शेड्यूल है, गवर्नमेंट का शेड्यूल है, एज वी टॉक्ड अबाउट इट
कि NNF गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक सिर्फ बेसिक वैक्सीन आती हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट all the diseases. Okay, now we'll discuss about some of the vaccines which are being given to our children. बारी बारी से डिस्कस करते हैं right from birth, और एक एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दोज वैक्सीन्स पॉइंट्स अबाउट दोज वैक्सीन्स, ताकि आपको थोड़ा अवेयरनेस रहे व्हाट टू एक्सपेक्ट and which vaccines do we give in the Indian scenario. So we can have a basic discussion about the importance of those vaccines, the side effects, and basic knowledge about those vaccines. So at birth India में 3 vaccines दी जाती हैं. One is BCG. BCG ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती है. ट्यूबरक्लोसिस से हुई बाकी बीमारियों को भी प्रिवेंट करती है, स्पेशली ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. शोल्डर पे दी जाती है, डेल्टॉइड इंसर्शन पे दी जाती है, लेफ्ट शोल्डर पे दी जाती है. सो मोस्ट ऑफ अस हैव अ मार्क ऑन द लेफ्ट शोल्डर. अगर आप देखें तो दैट इज़ ड्यू टू BCG वैक्सीन. इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है समझाना कि सो इट हैज़ टू बी गिवन इंट्राडर्मल, तो उसमें एक व्हील फॉर्मेशन होना चाहिए. इसका डॉक्टर्स को इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान रखें. एंड इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये होता है समझाना कि ये 2-3 महीने बाद फूल के इसमें पस भर के ये फट जाता है, एंड इट कैन डू दैट अगेन एंड अगेन. सो पेरेंट्स आर समटाइम्स वेरी वरीड कि जो लेफ्ट शोल्डर पे पस्ट्यूल बना हुआ है, इट्स नॉट बेसिकली पस्ट्यूल, इट्स अ रिएक्शन टू द BCG वैक्सीन, और ये नॉर्मल होता है. सो अगर हमारे बच्चे को BCG वैक्सीन लगा हुआ है लेफ्ट शोल्डर पे, तो not at the time of giving the vaccine, but after 2 to 3 months it may actually fill up with a pus like substance, and it would burst again. It may actually swell up. So this is normal. There's nothing much to be worried about it. कुछ नहीं करना है, वो फट के अपने आप वहाँ स्कार बन जाएगा. सो ये वैक्सीन हम बर्थ पे देते हैं. सेकेंड वैक्सीन विच इज़ गिवन एट बर्थ इज़ हेपेटाइटिस B वैक्सीन, विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया. हेपेटाइटिस B, पीलिया जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लिवर पे सोजन आ जाना, उसको रोकने के लिए हेपेटाइटिस B वैक्सीन बर्थ पे दी जानी बहुत ज़रूरी है. और अगर मदर को हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सिनेरियो इन इंडिया, तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन 12 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए. इसके साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जाती है. उससे इम्यूनोग्लोबुलिन से बच्चे का चांसेस ऑफ कैचिंग हेपेटाइटिस B फ्रॉम द मदर डिक्रीजेज अ लॉट. तो ये भी अगर आपके मदर को if she is suffering from hepatitis B at the time of delivery, this is something that has to be considered. Polio drops are also given at the time of birth. आजकल bivalent आते हैं, trivalent is an older talk now, क्योंकि पहले trivalent used to cause the vaccine-derived poliovirus. So अब जो है bivalent आते हैं. So most of the doctors use that only. Then we come over to vaccination at 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks of age. So 6, 10, 14 weeks पे जो vaccinations इंडिया में लगती हैं, वो abroad में 2 months, 4 months and 6 months पे लगती हैं. Most of the western countries, not all. तो इसमें हम 6 वैक्सीन सिंगल वैक्सीन में लगाते हैं. 6 बीमारियाँ एक सिंगल वैक्सीन में कवर करते हैं, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट में पेंटावेलेंट भी आती है. जनरली वी यूज़ हेक्सावेलेंट वैक्सीन, जिसमें 6 बीमारियाँ इकट्ठी कवर होती हैं. अब वो 6 बीमारियाँ में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B, हिब which is also can cause brain infection and lung infection, and polio, injectable polio it is. So these 6 vaccines are covered in a single shot, generally in hexavalent vaccine, or we can have it in the form of pentavalent vaccine, जिसमें IPV may not be there, and thus we give IPV intradermally separately, especially in the government sector. Second vaccine which is given at 6 and 14 weeks is pneumococcal vaccine. इस pneumococcal vaccine छाती निमोनिया कवर करती है, and of course it prevents the brain infection also by pneumococcus. Very important vaccine because pneumococcus outbreaks are very common, and it can harm our children in a lot many ways, and it is very dangerous bacteria. And the third
disease and the vaccine which we covered in this 6, 10, 14 weeks is the rotavirus. Orally दी जाती है, मुंह से दी जाती है और डायरिया को प्रिवेंट करती है. पहले 8 महीने इसको देने की फ़ायदा है. 8 महीने का अगर बच्चा हो गया है तो इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है. न्यूमोकॉकल वैक्सीन अभी 2-3 तरह की आती है. 10 वेलेंट आती है, 13 वेलेंट आती है, मतलब जिसमें 10 बैक्टीरिया कवर होते हैं, 13 बैक्टीरिया कवर होते हैं. ऑफ कोर्स एक का पोटेंसी थोड़े से दूसरे से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं. बट लगाना ज़रूरी है. ऑल ऑफ देम आर गुड, ऑल ऑफ देम आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रिसर्च हैज़ बीन डन एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रूवन टू बी very very beneficial and effective in prevention of infections. इनमें से जो अब कॉमन क्वेश्चन आता है, पेनलेस वैक्सीन लगाएं या पेन वाली वैक्सीन लगाएं, ये क्वेश्चन आता है उस हेक्सावेलेंट वैक्सीन के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ये 6 बीमारियां कवर होती हैं. नाउ अगेन जो दिस अगेन मोर ऑफ अ मिसनोमर बिकॉज पेनलेस पेन वाला वैक्सीन सिर्फ कहने में यूज़ होता है. ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि एक होल सेल पर्ट्यूसस होता है. इसका जो पर्ट्यूसस कंपोनेंट होता है वैक्सीन का, या वो होल सेल होता है या ए सेलुलर होता है. व्हेन इट्स ए सेलुलर तो उसको हम पेनलेस बोल देते हैं, बिकॉज वो लोकल रिएक्शन थोड़ा कम करता है, थोड़ा लोकल पेन, फीवर कम करता है, स्वेलिंग कम करता है, तो वी कॉल इट पेनलेस. और जो होल सेल होता है वो थोड़ा लोकल रिएक्शन और थोड़ा स्वेलिंग, गिल्टी, ये सब चीज़ें ज़्यादा कर सकता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेनफुल. सो जनरली पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कौन सा वाला वैक्सीन प्रेफर करें, पेनलेस या पेनफुल. कई पेरेंट्स को लगता है कि पेन वाला वैक्सीन जो होता है उसकी इम्यूनिटी बेटर होती है. सो व्हाट्स द फैक्ट? अगेन एज आई टोल्ड कि हम डायरेक्ट आंसर्स देंगे. वील ट्राई टू डिस्कस द डायरेक्ट एंड सिंपल फैक्ट्स विच आर अवेलेबल इन बुक्स एंड विच आर नोन इन द रिसर्च. सो पेन वाले वैक्सीन का थोड़ा सा इम्यूनिटी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी, लॉन्ग द नंबर ऑफ ईयर्स द इम्यूनिटी लास्ट्स कैन ऑल्सो बी मोर. बट अगेन डज दैट मीन कि हमारे को बच्चे को सिर्फ पेन वाला वैक्सीन ही लगाना चाहिए? नो, दैट्स नॉट ट्रू. बिकॉज जो WHO का रिकमेंडेशन है एंड इवन द इंडियन अथॉरिटीज़ व्हाट दे रिकमेंड इज दैट इफ द पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द पेन पार्ट, गिव देम द पेनलेस वैक्सीन. दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. And if they want to get the painful vaccine, then you can give the painful vaccine. I mean, so the crux is कि दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं depending on your personal preference and even the cost difference is there. तो आप कोई भी लगा सकते हैं. It's not an issue. The important thing is to get this vaccine done. Especially the one which is available in the government sector is the painful vaccine. बट इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि पेनफुल है तो नहीं लगाना है. इफ़ यू हैव सम अफोर्डेबिलिटी इशू एंड यू वांट टू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, इट्स अ डेफिनेट रिकमेंडेशन टू गेट योर वैक्सीन फॉर द चाइल्ड इवन इफ इट इज़ अ पेनफुल वैक्सीन. सो ये हमारा कंसेप्ट पेन एंड पेनफुल वैक्सीन का आई थिंक वी हैव क्लियर्ड हियर. So the next vaccine that we do after 3.5 months of age is at 6 months of age. Now पहले गाइडलाइंस डिफरेंट थी, द लेटेस्ट गाइडलाइंस आर वेरी डिफरेंट. यहाँ पे हम 6 मंथ्स पे टाइफाइड एंड फ्लू का एक शॉट देते हैं, फिर महीने के बाद फ्लू का सेकंड शॉट देते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि फ्लू का सेकंड शॉट इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चे के लिए, बिकॉज आजकल कोरोना एंड अ नंबर ऑफ वायरसेस आर क्रॉपिंग अप एंड ऑल ऑफ देम हैव म्यूटेशंस. तो बिकॉज ये म्यूटेशंस होती हैं, we need to get our child vaccinated with flu vaccine every year, because हर वैक्सीन हर साल फ्लू का वैक्सीन डिफरेंट आता है विद एंटीजेनिक ड्रिफ्ट. तो वो जो वैक्सीन होता है उसमें जो वायरस का वेरिएंट होता है दैट्स डिफरेंट. सो वी नीड टू गेट आवर चाइल्ड वैक्सीनेटेड एवरी ईयर एटलीस्ट वंस विद flu vaccine, especially in the flu season. So I generally call my patients in OPD around June, July, August, before the flu season starts, so that they get ample amount of time before they develop the immunity to the flu virus. So जो flu vaccine होती है, we discussed about the flu vaccine. The typhoid vaccine is very important. Of course वो 100% immunity नहीं provide करता है. A lot of patients come to us saying that our child had the typhoid vaccine, still he got typhoid. So टाइफाइड वैक्सीन बहुत अच्छा
100% इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, बट एटलीस्ट अगर बच्चे को टाइफाइड होना है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर टाइफाइड होता है तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है. तो टाइफाइड वैक्सीन इज़ ऑल्सो मस्ट. टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन इज़ वॉट इज़ रिकमेंडेड बाय AIP नाउ डेज. पहले बूस्टर डोज रिकमेंडेड 3 आफ्टर 3 years, but now a single dose is recommended at 6 months of age. And then we come over to the vaccines at 9 months of age. अब जब बच्चा 9 महीने का हो गया तो एक MMR वैक्सीन आती है, मीजल मम्स रूबेला. इट कवर्स अप 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अब जो गवर्नमेंट में वैक्सीन आती है वो सिर्फ MR है, उसमें मम्स नहीं कवर होता है. तो इट्स बेटर टू गेट द वैक्सीनेशन डन फ्रॉम प्राइवेट प्लेस, बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट हम 3 बीमारियाँ कवर अप कर रहे हैं. प्लस MMR के साथ विटामिन A देना चाहिए एट 9 months of age. दैट्स व्हाट्स डन इन द इंडियन शेड्यूल. So that's what I've seen कि बहुत सारे doctors, even private practitioners, they miss giving vitamin A to our children at after 6 months of age. This is actually not recommended. It's actually bad, because vitamin A is very important for building up the immunity of the child, and for the eyes of the child. Definitely vitamin A, everyone knows that it's very important for the eyes of the child to prevent night blindness. And of course vitamin A has an important role to play in the skin and immune system also of the child. So vitamin A अगर हम हर 6 महीने पे बच्चे को दे रहे हैं up to 5 years of age, तो बच्चे का growth and all these things would be helped a lot, and that's what should be taken care of along with the vaccination for the child. और 9 months में एक मेनिंगोकॉकल का फर्स्ट डोज लगता है, MCV, मेनिंगोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन. सो ACWY ये 4 स्ट्रेन मेनिंगोकॉकल वैक्सीन कवर करता है, एंड इट शुड बी गिवन बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ब्रेन इन्फेक्शन इन आवर चिल्ड्रन. अ बिट कॉस्टली वैक्सीन, बट अ डेफिनेट रिकमेंडेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन टू आवर चिल्ड्रन, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन टू आवर चिल्ड्रन. तो मिस नहीं करना चाहिए. So after 9 months you'll have to come to us at 12 months of age. 12 months of age पे meningococcal का second dose लगता है, and then Japanese encephalitis का especially in endemic areas first dose लगता है, and second month after we give the second dose. Not a very costly vaccine, and generally without any side effects. Side effects are there but very rarely reported. तो लगवा लेनी चाहिए. And 12 months पे जो most important vaccine which I recommend is hepatitis A. Hepatitis A इंडिया में बहुत कॉमन है, खाने पीने से स्प्रेड होता है, और it's a very fulminant hepatitis in some of the cases. So hepatitis A बहुत सारे बच्चों को होता है, पीलिया होता है, बच्चों का जॉन्डिस बढ़ता है, जॉन्डिस टाइम से ठीक हो जाता है, but in few of the cases it can cause fulminant hepatitis which can lead to death of the child. 10 हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए. अब 2 तरह का हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, एक इनएक्टिवेटेड आता है जिसके 2 डोजेज रिकमेंडेड हैं, और एक लाइव एटेन्यूएटेड आता है जिसका सिंगल डोज रिकमेंडेड है. आप कोई सा भी लगवाइए, पर लगवाना बहुत ज़रूरी है. सो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन वी डिस्कस्ड. नेक्स्ट वैक्सीनेशन वुड बी एट 15 months of age. 15 months पे अगेन important vaccination would be the second dose of MMR, measles, mumps, rubella, as we discussed. ये वैक्सीन हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका एक सेकेंड डोज लगेगा. एंड चिकन पॉक्स आजकल it's even recommended at 12 months of age. So depending on what your pediatrician prefers, give the first dose of chicken pox to your child from 12 to 15 months of age. पहले जो चिकन पॉक्स का सेकेंड डोज रिकमेंडेड था, दैट वाज एट 4 years of age, आज से 5 साल पहले. बट नाउ द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आर दैट यू कैन गिव द सेकेंड डोज ऑफ चिकन पॉक्स आफ्टर 3 months of the first dose. So it's better to get your child fully vaccinated against chicken pox by giving the second dose after 3 months of the first dose. So this was an important consideration. Then the booster dose of PCV is also given at 15 months of age. तो वो भी लगवाना ज़रूरी है. So most of these schedules you will get online, so you need not remember it. You may watch my video again. You can just go through the schedule online and you will come to know that ये जो वैक्सीन्स हैं ये कब कब और कैसे कैसे लगवानी है. बॉटम लाइन है इसके मिस नहीं करनी है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू आर फ्री टू कंटैक्ट मी ऑन फेसबुक और
personally in Apollo Credit Amritsar. So नेक्स्ट ऑफकोर्स हेक्साविलेंट जो वैक्सीन हमने बात की थी 6, 10, 14 वीक्स ऑफ एज पे, उसका बूस्टर डोज रिकमेंडेड है आफ्टर दैट फ्रॉम 16 to 18 months of age. So that is again an important vaccine that needs to be given. So this is where we complete most of our vaccines at 1.5 year of age. So at least you can reassure that आपके बच्चे की 90% वैक्सीन अब कंप्लीट हैं जब वो 1.5 साल का हो गया, अगर उन्होंने प्रॉपरली लगाई हैं. So if they missed any vaccines, they can later on get them done. And अगर नहीं मिस की हैं तो then they should be reassured that 90% of vaccination हो गया है. Now once a year or twice a year they may have to get vaccinated, their child, depending on what the scenario is. So after that the booster doses of course are given at 4 to 6 years of age. आजकल toddlers and जो प्री स्कूल पीरियड है वो थोड़ा कम हो गया है, the children are going to school earlier, तो instead of 4 to 6 years of age you can give this vaccines at 3 to 6 years of age depending on the patient's preference. Again the booster doses for diphtheria, tetanus and pertussis needs to be given. MMR का booster dose लगता है इस टाइम पे, and टाइफाइड का बूस्टर डोज पहले रिकमेंडेड था, बट नाउ डेज सिंगल डोज इज रिकमेंडेड एज फार एज 4 to 6 years of age is concerned. फ्लू का हर साल एक बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है, एज वी डिस्कस्ड कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, म्यूटेशंस होती हैं, तो वी कैन नॉट मिस दैट इम्पॉर्टेंट vaccination for our children. Then this is something which was very important to be discussed. And then again at 10 years of age, TT ka vaccine, again that's diphtheria and tetanus vaccine that needs to be given at 10, and again tetanus vaccine at 16 years of age. So 10 साल पे TT and 16 years पे जो है tetanus का vaccine is very very important. Now we come over to some special vaccines जो हमें पता होनी चाहिए. First of all HPV. HPV females में commonly it's used vaccine for prevention of cervical cancer, but nowadays according to latest recommendations इसका role जो है males में भी आ गया है. So HPV cervical cancer को ही नहीं protect करता है. Now it's preventing oropharyngeal cancers and anal cancers, and there's a whole list of cancers it protects our children against. So 9 साल के बाद 14 साल तक 2 डोजेज, और 14 साल के बाद 45 साल तक 3 डोजेज रिकमेंडेड हैं फॉर गर्ल्स in India. Recommendation for boys is upcoming in India. US में there's already a recommendation in the boys for HPV vaccine for the prevention of cancers other than the cervical cancer. तो HPV vaccination बहुत ज़रूरी है because cervical cancer is very very common in our females, and HPV vaccine plays a very very important role in prevention of this cancer. So be it your pediatrician or your gynecologist, please get this vaccination done. And nowadays, so पहले quadrivalent vaccine आती थी, अभी भी आती है, तो so quadrivalent vaccine is good, very good. वो हमारे बच्चे को इन बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है. आजकल एक नई वैक्सीन आई है जो 9 स्ट्रेन्स कंटेन करती है. तो जो पहले की वैक्सीन चल रही है वो 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है. नाउ द लेटेस्ट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स. सो these 9 strains of course protect us against a few more diseases. तो depending on, because इसमें cost का थोड़ा difference है, depending on affordability you can get any of these vaccines just, but the important crux is that ये vaccines लगवा लेनी चाहिए to protect our mothers and to protect our children above 9 years of age. And again final and most important thing again nowadays in the pandemic era is the corona vaccine. So again a lot of recommendations are there. India में भी 12 साल से ऊपर recommendation आ गया है. US and western countries में 2 साल से ऊपर recommendation आ गया है to get the corona vaccine done. करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, उससे health issues हो सकते हैं, inflammation हो सकती है body में. lot of myths are going about in the market. Again almost all the vaccines which are in the market are approved by
good authorities, and all of them are safe, and you should get them done. It's just like another flu vaccine, and according to recommendation, जैसे जैसे government बताए, every year booster dose of the vaccine should be given. Should we get our children vaccinated against these coronaviruses? Yes, definitely. According to me, in the near future, 6 महीने से ऊपर ऑलमोस्ट हर बच्चे को कोरोना वैक्सीन मैंडेटरी हो जाएगा. अभी तक ये रिकमेंडेशन नहीं आई है, बट अ लॉट ऑफ रिसर्च इज ऑन गोइंग, एंड स्पेशली इन यूएसए द रिसर्च इज ऑन गोइंग, एंड above 6 months corona vaccination would become a mandate for every child in the near future. So as far as the present scenario is concerned, I talked about the guidelines, I talked about the age in India. So abhi guidelines ke accordingly we can get our children vaccinated, and we must get our children vaccinated against the coronavirus, because we never know when the virus will mutate and we may have to suffer another peak of coronavirus pandemic. So thank you. It was pleasure interacting with all of you. I'll love to have any of the questions. If you have, you can also post them below my chat, and I can answer them later on for you also. I hope I was able to give you some important information about the vaccination and the current scenario of vaccination and the importance of vaccination in children. Thank you. Have a good day. So there's a question that vaccinated people would face joint pains, knee pains, nerve problems. So Ajay, it may not be the scenario always, because definitely some of the vaccines do have these side effects, but not all, and it's very rare. So it should not be a concern while vaccinating our children or ourselves for these diseases. So there are no more questions. Thank you, Apollo, for giving me an opportunity to discuss this important topic with my clients. Uh, Thank you, Nikita, and